Prime Minister Modi's emotional message before Pran Pratishtha ahead of the inauguration ceremony of the Ram Mandir. Prime Minister has released an audio message. He has stated that he will be starting an 11-day special ritual from today in the run-up to the consecration of the temple in Ayodhya. In an audio message, Prime Minister Modi said that he was fortunate to witness the historic and auspicious occasion. According to Hindu Shastras, the holy scriptures, Pran Pratishtha of a deity's idol is a detailed ritual. There are specific rules that are laid down which need to be followed before the ceremony. Prime Minister Modi has decided to rigorously follow all the rituals. हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जिजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जिजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं, तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा, और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग, तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं,
कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। So that, of course, was the special audio message that the Prime Minister released this morning, saying that he will be observing a special ritual on all 11 days in the run-up to the Pran Pratishtha in Ayodhya on January 22nd. He, of course, said that he was very emotional, given that he will have the good fortune to perform this very auspicious ceremony in Ayodhya, and he does realize, of course, what he carries with him are the sentiments of 140 crore Indians. He says that it is only befitting that he start this ritual as has been laid out in the Holy Scriptures today, which is the birth anniversary of Swami Vivekananda, the birth anniversary of Jijabai. On that note, he, of course, recalled his mother chanting Jai Shri Ram, as well being a devout Ram Bhakt. He lost his mother last year, so he was very emotional and very sentimental about it. He said that there is a very rigorous ritual that is observed in the run-up to Pran Pratishtha, and he wants to observe it to the T. He wants to ensure that there's nothing that is left wanting in terms of this very auspicious occasion. So he will also be fasting over the next 11 days. He will, of course, start this holy exercise today when he reaches Maharashtra's Nashik. From the Panchvati Dham is where the Prime Minister will be, in fact, kickstarting this very special observance for the next 11 days. My colleague Abhishek Mishra is now joining me live from Ayodhya. Abhishek, the Prime Minister, of course, saying that he will be observing these 11 days of a very special ritual, because that is exactly what the scriptures say, and he doesn't want to leave anything out in terms of following every little holy ritual that takes place as far as any Pran Pratishtha ceremony is concerned. Well, absolutely, Paulami, and that is a very big responsibility which the Prime Minister has shouldered. He will be taking a lot of care about, making himself prepared for that day. 11 days of commitment in terms of, physically, mentally, spiritually, he will be preparing himself, as there are several, duties which to be followed. Because it's a Pran Pratishtha ceremony, it requires certain kind of attention for that Yajamana. And also at the same time, he wants to devote himself entirely for this process. It's a sacred process. It needs a lot of dedication. And that is why Prime Minister has said that he is entirely dedicated for this particular event. Also, he said that he will be representing all those voices, all those millions and millions of people who were thinking and constantly following Lord Ram. And he's not just representing himself or the government, but representing the every voice of the country. And that is why he is going to make sure that he is entirely dedicated for this auspicious time. Also, we have seen how there has been a lot of questions over his doing this Pran Pratishtha ceremony, be it the political acquisition or even some and saints have also Okay, we seem to have some trouble with Abhishek's connection, but he's in Ayodhya, of course, tracking all those developments that are taking place
in the run-up to Pran Pratishtha on January 22nd. In fact, high-tech security measures have been put in place ahead of the ceremony in Ayodhya. Now, the holy city will be swarmed with nearly 8,000 police personnel, in addition to paramilitary forces and special units of the UP police who will be assisted by drones besides AI-driven anti-drone tech. Here's a detailed report. A comprehensive security deployment envelops the sacred city of Ayodhya. AI-driven drones, cutting-edge surveillance tech, and counter-drone systems fortify the airspace. देखिए ये फ्रीक्वेंसी जैमर पर हम लोग इस पे एक पूरा का पूरा सिस्टम इस पे काम करता है। बहुत सारी टेक्निक्स इसमें है और बेसिकली कई सारे एंटी ड्रोन सिस्टम्स में से एक सिस्टम हम लोगों का आज जो हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली अपने पास लिया है और ये आगे की भी हमारे अयोध्या जी की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह से इसमें हम लोग मुस्तैद रहेंगे। यदि हमारे पास कोई भी बिना अनुमति का ड्रोन जो हमारे येलो जोन एरिया में दिखता है तो हम उसको कैप्चर करके उसे कंट्रोल करने की हमारे पास कैपेसिटी रहेगी। Israeli-made technology ready to neutralize rogue UAVs using advanced hacking techniques. An integrated traffic management system being implemented, interconnected with 1,500 surveillance cameras. Disaster management teams from the state and center on standby. River patrols and deployment of cruise boats by January 20th enhance security along the river. Ayodhya bustles for the historic consecration scheduled for January 22nd. Stringent measures in place at the airport, train station and entry points. Emergency crews stand by in tent cities to accommodate faithful attendees. From January 20th to January 22nd, arrivals are restricted to visitors invited formally by the Sri Ram Janmabhoomi Trust. As Ayodhya prepares for the historic consecration on January 22nd, a multi-layered security apparatus ensures a watertight environment, combining technology with on-the-ground measures to safeguard this momentous event. Bureau Report, India Today.